आप देख रहे हैं ओपन। सर मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका ओपन सर्च में। A very good evening to all my viewers. You are watching Open Search and this is Amrita Srivastav, your host of the day. Today we have a very special guest with us who is not only beautiful but a very talented actress, director and producer as well. So let's welcome Miss Yamini Swami. Yamini, welcome to the show. Thank you so much, Amrita. How are you, Yamini? And your kind words. Okay. I am absolutely doing good, and after hearing your voice, I'm feeling much more better. Okay, Yamini, tell us something about yourself, about your background, because you are a actress who is just introduced to this Bollywood industry. People quite interested to know about you, about your schooling. So, and how do you especially get into this Bollywood industry? So, please tell us. Definitely. So, basically, I would say that while I was in my school till then, when I was a kid, I never had such an intention anywhere in my head that, I will be coming into the entertainment industry. Nowhere at all. So this is something like, it happened all of a sudden once I grew up and I finished my college, my graduation. And that's when I realized, okay, I wanted to do something in the entertainment industry. It could be anything. It could be acting. It could be behind the camera. It could be technical things. Anything. But it has to be something related to the entertainment and it should involve sort of creativity as well. So this is something I realized while I was doing my graduation. I'm a student of mass communication and journalism. Oh, wow. So while I was doing my mass communication, that's when I realized I've joined the college that, I want to be a journalist. But then I realized that, I'm much more keen to be in front of the camera and, I have to explore myself and to, get into the field of acting and, do all sort of things. And that's how it all started. So that's about my personal self. Okay, moving on to the next question. Talking about your film, Badhai Ho Beti Hui Hai. It sounds very interesting. So, what's the story about the film and what's your role in it? So basically what happened, like I think in the year 2019, that's when I wrote something especially for Women's Day. Something that is talking about the women, the journey of a woman. So it's a kind of a composition I wrote, which later on turned into a lyrics, and now it's a part of the movie as the title song of the movie. So I wrote just a piece of composition and I showed it to my parents and my family, all my friends and people who are close to me. They all liked it so much, and that's when this idea came to my head that I should start writing a story on this entire subject and I have to make a film on this. And now Badhai Ho Beti is all set to release, and that's how the concept came into picture. Okay. So it's your first movie, right? Sorry, just wanted to answer your next question. You have asked me what I'm doing in this particular movie. So I'm playing the lead in this movie. My character name is Shakti Singh, and I am playing a beautiful, like a daughter, and I'm also playing an IS officer in this movie, who later on, after growing up, she becomes an IS officer. And the best part is I have portrayed the role of a 14-year-old teenager till I become the IS officer. Oh, that is so good. Okay. Yeah, so I got various shades to play in the movie. I've explored my teenager within the same movie. I've explored the romantic side in the movie. I've explored the things that I can do for the society. I've explored to be a good daughter, to be a good lover, to be a very good
person to give a lot of things to the nation, to the society, to do a lot of things for the people around me. So I have got various shades in the same movie. Okay. So it's your first movie in the film industry, and in just first attempt, you did acting, directing, and producing all together. So my question is to you, like, which one is the most difficult part, and how did you manage all three things? To be very honest with you, I mean, this is a question, like, most of the people while they are interviewing me, they've been asking me a lot many times, and to be very honest, all three fields are totally different. It's from each other, and it's very difficult. It's not easy at all. It looks like people must be thinking, oh, acting is like, actors ko kya karna rehta hai? It's really they just very have difficult. to be in front of the camera and there's nothing much, right? बट ऐसा नहीं है. एक्टर्स को भी मतलब उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना कि बाकी यूनिट एक फिल्म या एक प्रोजेक्ट में काम करने में जितना इन्वॉल्वमेंट उनका होता है. तो एक्टिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, direction is different, production is different, so every field has their own bits and pieces of challenges. I will not, it is very difficult for me to say कि कौन सा easy था या कौन सा difficult था, because this movie is my first movie and it's like my baby. I have to own it in all aspects. मतलब मुझे सब कुछ करना था, मुझे सब एक्सप्लोर करना था, और मुझे एक बेहतरीन मूवी बनानी थी और मुझे अपने आप को प्रूव करना था. बिकॉज मूवी के अंदर जो मेरा कैरेक्टर है उसमें शक्ति जो लड़की है वो सब कुछ कर सकती है, और वो उसने मूवी में सब कुछ किया है. मतलब अपने पेरेंट्स के लिए, देश के लिए, अपने खुद के लिए, समाज के लिए. तो उसने सबके लिए सब कुछ किया है. एंड मतलब देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू. So similarly, I wanted to prove that if I'm showing it in the movie, I have to even do it personally myself. I just wanted to do that. कि मतलब मैं सिर्फ मूवी में वो एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहती थी, असल में वो एग्जाम्पल सेट करते हुए मैं रियल मूवी बनाना चाहती थी. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. उसमें बहुत सारी मेहनत लगी और बहुत टफ था, बहुत मुश्किल थी, और बहुत बार बीच में ऐसा लगा कि लाइक नहीं हो पाएगा. बट एवरी टाइम आई केप्ट माई सेल्फ ऑन द ट्रैक. हमेशा अपने आप को मोटिवेट करती रही, और दैट्स हाउ things are in place now. I must appreciate this, and it was really difficult to think all three things together, and it's not an easy thing. People generally say is acting, what you were mentioning just now, acting or directing, and you were doing all three things in first attempt. I must tell you, Yamini, you are super talented, and just according to the name of your movie, I should tell your parents that बधाई हो बेटी हुई है, and this beti rocks. Really, you did fantastic job, Yamini. Okay. Basically, just to let you know, Amrita, like when this concept came into my head and when I was going to start this movie, so I was just going to like be a producer and produce this movie under my production house, and I was going to direct the movie. There was no plans for me to enact in this particular movie, but it again came to me as a surprise. Like, people were so much convinced. I mean, except me, everybody else was convinced that it's a movie about a journey of a girl child. So people around me, they have much more confidence than me, I would say. That वो लोग ये कह रहे थे कि मतलब आप ही क्यों नहीं इस मूवी को करते हो, बिकॉज एक लड़की की जर्नी हमको दिखानी है, एक नया फेस चाहिए, और you have to show a girl next door kind of stuff. So why don't you yourself, because it's your story, it's your concept, so why don't you just take the lead and come in front of the camera and just like do this movie. So that's how it was very difficult. People persuaded me a lot. They convinced me कि मतलब मुझे करनी चाहिए. फिर मैंने वो बीड़ा उठाया कि हाँ ठीक है,
मुझे करनी चाहिए। और जब मूवी बन के आ गई तो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि हाँ मतलब मैं कर सकती हूँ या मैंने किया। Especially Yamini, those who says कि लड़की है इससे नहीं हो पाएगा. Look at you in first attempt. You did all three things, and I must say you represent actually in real life the women empowerment. So here you are, and you are a great example. So yeah, लड़की हुई है and बधाई हो उसके लिए. Exactly. And you really set this example, not only in film but in real life. Okay, so moving on to the next question, Yamini. Who is your favorite actor and actress in the Bollywood industry, and who inspires you the most? ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। एक्चुअली बचपन से मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद था। मतलब मेरे जो माय बैकग्राउंड दैट आई एम कमिंग फ्रॉम, इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड वेयर फिल्म्स एंड ऑल दिस इज नॉट सो मच लाइक People don't accept डोंट it. पुश देयर किड्स टू वॉच इट या। तो मतलब ऐसा माहौल नहीं था घर पे, बट मुझे फिल्में देखने का शौक बचपन से था। और I'm not doing anything, I keep myself indulged into various movies and especially some content-oriented stuff. I really love it. I love to watch movies, I would say. तो बहुत मुश्किल है ये, लेकिन मैं छोटी थी तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है इस चीज से कि बचपन में मुझे मतलब मैंने एक सर्कस आता था शाहरुख खान का, जब मैं मतलब टीवी देखना मैंने शुरू किया। मतलब सब बोलते थे कि मैं मतलब बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, तब से मैं क्रिकेट और सर्कस, ये दो चीज मैं जब बैठ नहीं सकती थी, मैं तभी से एज अ टॉट आई यूज्ड टू वॉच दीज टू थिंग्स। आई वाज सो क्रेजी दैट इफ आई एम क्राइंग माय मॉम विल टर्न ऑन अ क्रिकेट मैच और शी विल टर्न ऑन द सर्कस और शाहरुख खान। तो फिर मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि ओके दिस सर्कस आई यूज्ड टू वॉच, इट वाज ऑफ शाहरुख खान। तो तब से आई वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ शाहरुख खान। I really like him as an actor, and actress में मुझे माधुरी दीक्षित, I'm a big fan of her. Okay. Okay. So next question is, what was the best part while shooting for this movie? And there is other actors as well in the movie like Jaya Prada and other great actors also involved. So how was the experience while working with them? Experience was great. I mean, I still remember my first shot, which was with Jaya Prada ji. पहले तो मैं शुरू में बहुत थोड़ी सी मतलब नर्वस हो रही थी कि मतलब यू नो शी इज सच अ ग्रेट एक्टर और ऑलरेडी इतना टाइम उन लोगों ने इंडस्ट्री में काम किया है, एंड यू नो आई वाज लाइक गेटिंग वेरी वरीड एज इन कि कैसे होगा एंड कि कहीं मतलब मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। मैं बहुत ही नर्वस हो रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। But I don't know, I just wanted somewhere in my head, I was very much sure that मुझे अपना best देना है and I have to, since I have taken this on my own, I have to do it and I have to prove myself. मतलब उसमें पीछे there is no looking back. तो ये सोच के और हम लोग का जब ये first shot था उनके साथ एंड वो सीन जब ही कट हुआ तो उसके बाद जया जी वाज लाइक, शी प्रेज्ड मी. She said that I was very confident on camera. She never felt that this is my first movie, I'm facing the camera for the first time, and the way जो माहौल सेट पे था, everything was so much in discipline, and how I was managing things behind the camera as well as in front of it. So she was very like really cheering me up, and मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब the praise that she was saying so much good about my work, उससे मुझे और confidence आया कि मैं मतलब it's all from the horse's mouth, I would say. I was really very happy. Okay. Okay. और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला और मतलब it was great, I would say. It was great. She's very down to earth and she's very talented and she's very professional. Okay. Okay. Now I would like to ask you some controversial question.
So, Also yeah, issues. Okay. yeah, and it's a क्या serious पूछने topic वाले too. हो? So, your movie is based on a woman's issue, and every day, women's related crime ratios are increasing in our country. So, according to you, what changes are required for a society, for women and men? What do you think? आ, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मतलब इट्स लाइक इसका अगर मैं आंसर देने जाऊं तो ये पूरा इंटरव्यू भी कम पड़ जाएगा. डोंट यू थिंक सो? बट स्टिल इन शॉर्ट, इफ आई हैव टू से, आई विल टेल यू कि बेसिकली प्रॉब्लम जैसे हमारे मूवी के, हाँ, प्रॉब्लम्स तो मतलब इतनी सारी है कि आप एक बोलो तो मतलब मिलियन बिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी. ठीक है. जब हम मूवी बना रहे थे, जब ये जो कॉन्सेप्ट हमारी मूवी में था, तो बेसिकली जो हम बात करते हैं कि अभी हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि why female is important to a society. Don't kill that female child, let her take birth, let her see the world, and give her proper education and things like that, right? तो वो जो सेव गर्ल चाइल्ड और एजुकेट गर्ल चाइल्ड की जो बेसिक बात अभी हम कर रहे थे, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेविंग अ गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड, बिकॉज द क्राइम्स इफ यू लुक, वो इससे ज्यादा है. मतलब सेव गर्ल चाइल्ड और एजुकेट गर्ल चाइल्ड, अभी एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत आउटडेटेड और पुराना हो गया है. अभी अगर आपने लड़की बचा ली है और लड़की को पढ़ा भी दिया है, तो भी इतने सारे क्राइम्स हैं कि मतलब आप डील करने जाओ या आप देखो कि अगर लड़की को आप पढ़ा भी देते हो, पढ़ने के बाद भी अभी रिसेंटली ऑफ लेटली मैंने देखा कि कुछ मतलब एक लड़की थी जो डॉक्टर थी, यू मस्ट हैव हर्ड, शी वाज वर्किंग इन यूएस, शी केम टू अ विलेज फॉर फ्यू डेज, और उसके साथ मतलब रेप हो गया, उसको मार दिया. ऑलरेडी वो लड़की एक डॉक्टर, तो जो लड़की ने मतलब एक विलेज से उठ के पैदा हुई, पढ़ी लिखी, उसके माँ बाप ने इतनी मेहनत की उसके ऊपर, और वो एक डॉक्टर की सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर सकती थी, जस्ट इमेजिन. ठीक है. और आपने मतलब सॉरी, मतलब उस लड़की के साथ ऐसा क्राइम हो गया एंड शी वाज डेड. आपने सिर्फ एक लड़की को नहीं मारा, उस लड़की के नाम पे जो सोसाइटी को जो सब कुछ मिलने वाला था, उस चीज को खत्म कर दिया. तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. आप अगर आज भी देखो, सपोज करो लाइक यू आर वर्किंग, राइट? आई हैव स्टार्टेड वर्किंग in a male dominated industry. This entertainment industry, it's not led by female, it's mostly by men, right? If you agree with me. So in whichever industry you're working, are you there, Amrita, or we got disconnected? Yeah, I'm here. ओके. मैं कुछ ज्यादा ज्ञान की बातें कर रही थी. It's going good. ओके. तो आप इवन इफ यू आर इफ ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज कि अगर एक लड़की पढ़ लिख के बड़ी भी हो जाती है, तो क्राइम रेशियो अभी भी सोसाइटी में इतना ज्यादा है, वेदर इट इज अ विलेज और इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. आप मतलब कोई भी जगह यू कैन नॉट से इट्स सेफ. व्हिच प्लेस इज सेफ फॉर वुमेन? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो जाता है. Exactly. And it's any type of crime, and even if you are eve teasing a woman, even that's a crime. It's not just saying that rape is a crime, but anything that you are doing against her, wish, will, everything is a crime. Okay. Sure. So it's a big topic to discuss. It's not an easy thing. तो पढ़ने लिखने और बच्ची के पैदा होने के अलावा उसका एक औरत का स्ट्रगल जो है वो हमेशा मतलब नॉन स्टॉप जारी रहने वाला है. वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है. इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर थिंग्स, समाज इतना आगे बढ़ते जा रहा है. बोलते 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं सब लोग, फेमिनिज्म की बात करते हैं सब लोग, बट मतलब society में still there is lot many changes. I see improvement, but still there is a scope of improvement everywhere that is required when it comes to gender equality. Men and women are like very important for society to balance the nature. They both are important.
तो वो क्राइम रेशियो बहुत ज्यादा है, आज भी है, मतलब इनफैक्ट पहले की तुलना में पहले से ज्यादा इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट्स नॉट रिड्यूसिंग. एग्जैक्टली. So all need to be aware of such things and we need to do something to get things in place. मतलब एक किसी के करने से ये नहीं होगा, सबको मिलके साथ में आके और they will have to work towards it. Absolutely. Very well said. It's very easy to say, Amrita, like Yeah. it's very easy to say. It's easy to say, but it's very difficult to do. Difficult to do. लेकिन हर चीज की एक हर शुरुआत होती है, तो it's just people will have to start from themselves and then things will fall in place. That's what I believe. Very well said, Yamini. And totally agree to your points. Okay. Enough serious topic. Now moving on to some entertaining topics. Okay. Wow. Now it's an interesting part. Yeah. Okay. Wow. So we'll play a small quick game where I will ask you some questions and you have to answer in as fast as you can. You can answer, okay? Okay. Okay. I'll try my best. Sure. Okay. If you would not be an actress, then what would you? Like I said, I love entertainment industry, anything in the entertainment industry. But as a kid, I always wanted to be an IAS officer. So in the movie, I have मतलब वो अपना शौक पूरा कर लिया. So मुझे हमेशा से IAS officer बनना था. Okay. But my god. but anyhow, I just got to play the role of IAS officer in the movie. So I'm happy that that was my dream. Okay. Okay. अली ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे मूवी बनानी पड़ी. Okay. Number 2. Define yourself in 3 words. 3 words. Quick. 3 words. 3 words or 3 letters? 3 words. 3 words. Live, love, laugh. Okay. Live, love, laugh. Live, love, laugh. Okay. Fine. Yeah. So I'm very fond of this quote. It gives a lot of positive vibes, and it's a very special quote in my life. So everywhere, in my room and everywhere, I have placed this quote: "Live, love, laugh," because I believe in these 3 things. कि इंसान का जन्म होता है, उसको ये 3 काम करने बहुत जरूरी है. That is to live, that is to love, and that is to laugh. आपने ये 3 काम नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया. Okay. So basically, you are smiling, chirpy girl in real life. Yeah. Oh, good. Okay. Now I'll give you some options in the following question. I'll ask you, and you have to choose any one. Okay. So you have to answer it within 10 seconds. Get ready. Okay. Summer or winter? Come on. Winter. Okay. If you I don't like summer because of sun tanning. I don't like Everyone's going problem. out. I'm a night I person, as understand. my name is Yamini, so I'm a night person. okay. Number 2. If you could time travel, then where would you go? To the future or past? And what will you see? Fast. I would love to go to future, not to the past, because past I've already seen, I've experienced, and with that experience, I want to make my future bright. So I want to see the brighter side of my life. Smart answer. Okay, number 3. Explore the ocean or explore the universe? I think ocean is part of the universe. Don't confuse me. So I would love to explore the universe. Automatically, There's ocean anything will hidden be a part of inside it. of the ocean and universe as well. So Yeah. which one? Yeah. Which one? Universe. 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 Okay. Cool. Yeah, Then mine because too, keeping this universe. in my head, that ocean is part of the universe. Right. Okay, number 4. Suppose you got the genie, what would be your 3 ultimate wishes? 3 ultimate wishes. यहाँ मतलब बचपन से मैंने कहानियां सुनी है ये चीज की, तो जीनी से और 3 विश मांग लेते कि जब शायद मैं तुमसे 3 विश और मांग सकूं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑफ द डे, एंड जो हमारी ख्वाहिशें हैं वो कभी खत्म नहीं होती है. सो आई विल आस्क द जीनी
that whenever I want, I can ask you again, Freebish. Oh my God, such a smart move, Yamini. Wow, I'm your fan now. I'm your fan. थैंक यू। मैंने बचपन में ये कहानी मैंने सुनी है, तो उसमें ऐसा ही रहता है कि उस जीनी से जब ये पूछते कि आप जीनी से क्या मांगोगे, तो मैंने सुना है कि बोलते मैं उससे और 3 विश जब चाहे तब मांगू। Wow, wow. काफी अच्छा काफी अच्छी चीज। Like lots many options. Okay, that was so much fun, Yamini. I hope you enjoyed. Very much. Okay, that's a wrap for today. And before saying goodbye to our viewers, I request you, Yamini, to say a few lines about the film release, about the film, and just say anything to our viewers who are watching. So बधाई हो बेटी हुई है is not just a film, it's my dream. It's my first project and it's my dream project, I would say. ये एक जो मूवी है, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, इस मूवी को एक बेटी ने ही बनाया, यानी मैंने बनाया है, मैंने उसमें अदाकारी की है, मैंने उसमें रोल निभाया है। तो जो कुछ मैंने पर्दे पे दिखाया है, वो असल में मैंने पर्दे के पीछे रह के भी एक्सपीरियंस किया है। तो इट्स द सेलिब्रेशन ऑफ जर्नी बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने और अपने आसपास जितने भी फीमेल्स चाइल्ड जो भी जिनका भी बर्थ हो रहा है, उन सभी को हम एक काइंड ऑफ एक अपने रूटीन में लेके आए कि जैसे हम एक लड़के के पैदा होने पे जितना खुश होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वो सब लड़की का भी हक है। तो लड़की को भी बोले, लड़की के जन्म पे भी माँ बाप को के लिए लड़की भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रेशियस है, उसके लिए हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ जुबान से आप कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं और मन में आपके है वो लड़की हुई है वाली वैसा वाला नहीं होना चाहिए। ये पर्सनली मैंने मतलब बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ है। when I was born, so my nanny, she said that she was like a little unhappy that she's a girl child and पहली लड़की हो गई। My parents keep telling me those stories, when I grow up. So मैं यही चाहती हूँ कि सारे लोग लड़कियों के बर्थ को उस तरीके से सेलिब्रेट करें, उनके बर्थ को कॉन्ग्रेचुलेट करें। और इस मूवी के थ्रू हमने एक एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया है कि एक लड़की की जर्नी कितनी डिफिकल्ट होती है, लेकिन उस जर्नी को एक लड़की को सिर्फ आप सोसाइटी का, उसके माँ बाप का, उसके आसपास उसके दोस्तों का, सिर्फ हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ प्यार और सपोर्ट चाहिए होता है। We don't want Sahara of anybody. We just want the support. We want a little love and care. That's all we need. Rest everything we are capable enough to do ourselves. ठीक है? तो मैं ये चीज बिलीव करती हूँ, मैंने ये चीज महसूस किया है और मैं ये सारे लोगों को, ये आपके ऑडियंस, अपने व्यूअर्स, सबको ये बताना चाहती हूँ कि यही सेम चीज वो लोग सोचे कि एक लड़की सब कुछ कर सकती है, प्रोवाइडेड you give her respect, you give her love, you give her support. And all these 3 things that I'm talking about, it costs nothing. मतलब इसके लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना है to share your love, care and support. You just have to be freely, all these things are available. You just have to be of that mindset कि आप अपने दिल से ये सारी चीजें अपने आसपास, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी बीवी हो, आपकी माँ हो, there are various people, various women around you. So आप as a male or as guys, you do this for them, make them feel love, make them feel special, and world will be a very beautiful place to stay together. It was fantastic. My movie is all set. My movie is all set to release soon, although the date is not finalized yet because of the pandemic situation that has happened, so we have to postpone it. So I'll not be commenting on that, but very soon I would say. तो मैं ये चाहती हूँ कि
आप ये सोच के इस मूवी को देखिएगा कि आप सच में मतलब आप अपनी अगर बेटियों से प्यार करते हैं तो आपको ये मूवी मतलब जरूर देखनी चाहिए. इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी. एंड मेरे लिए देखिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट, यू नो, कि एक लड़की ने प्यार से बनाई है एंड द मूवी इज लाइक बधाई हो बेटी हुई है, तो ये देखना तो बनता है बहुत. सब लोग देखिए. Yamini, it was such an honor to talking to you. And ladies and gentlemen, that's Yamini Swami. And Yamini, I wish you all the success. I wish this film becomes the greatest hit of the year. So all the best for the movie. So till then, take care. Namaskar. Thank you, Yamini.